Hello everyone, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. कुछ तो है यार, कुछ तो है चेल्सी के कैंप में, कुछ तो हो रहा है। और हाँ, आज हम यहाँ पर है not just to discuss Chelsea but a lot more, like I always say, so do stay till the very end, because yes, there will be some news that we're talking about, some contract talks of certain other clubs, and of course some tantrums, certainly for sure in Chelsea, and there are matches in between, and that is what the most important factor is. So before starting, आप सब लोग को दरख्वास्त है यार, काइंडली जस्ट स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट. यस, यू हैव बीन हेल्पिंग अस अभी तक, और अभी भी हमें चाहिए till we reach that 2K and beyond. So yes, लाइक सब्सक्राइब और वो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, क्योंकि आपको पता लगेगा जब भी हम नेक्स्ट आएंगे लाइव या विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो. सो हाँ, आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं क्विकली. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक आप देख रहे हो स्क्रीन पर नीचे, यस, मोर लुकाकू tantrums. You know what Lukaku is saying? This is what he's saying. I'm out of here. ये सच्चाई है, लगता है मुझे. अगेन नॉट येट प्रूवन, बट एक दो हफ्ते बाद में जिसके बाद जो हुआ, एंड अगेन साइमन फिलिप्स, बहुत रिनाउंड काइंड ऑफ जर्नलिस्ट, आई वुड से समवन आई ट्रस्ट, और ऑब्वियसली एब्सोल्यूट चेल्सी, अनदर वेरी गुड ट्विटर अकाउंट, they both have actually said that hey, Lukaku supposedly is still looking for a move back to Italy and not happy. उसने वो नहीं पाया चेल्सी में जो वो एक्सपेक्ट करा था. हर एक चेल्सी फैन क्या सोच रहा है, वो अभी बोलूं, ये सोच रहा है, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. नहीं, यही नहीं, मैं तो ये भी बोलता हूँ, हम गधे हैं. लाइक ऑनेस्टली, क्या समझ रखे यार ये लोग, क्या समझ रखे अपने आप को. आई नो लॉट ऑफ टाइम्स आप मीडिया में कुछ ज्यादा ही चीजें होती है, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं लोग, बट साइमन फिलिप्स और एब्सोल्यूट चेल्सी, आई ट्रस्ट दोस अकाउंट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड मोर ऑफन देन नॉट वो सही निकलते हैं. लेट्स होप फॉर चेल्सी से कि इट इज बेसिकली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और वापस लुकाकू कम्स आउट एंड बेसिकली प्रूव्स ऑन द पिच इस बार. क्योंकि यार वो जो इंटरव्यू दिया, हम सब जानते हैं, वो बेसिकली एक मीडिया मैनेज इंटरव्यू था, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. आप भाई साहब, आपको गोल स्कोर करने पड़ेंगे, और जूते के लेस बांधने के लिए नहीं रखा है हम चेल्सी में. लाइक 100 मिलियन, लाइक रियली, आई नो टू मच प्रेशर, लेकिन हाँ, चेल्सी एंड स्ट्राइकर्स इट्स अ थिंग, तो आपको डबल एफर्ट देना ही पड़ेगा आफ्टर व्हाट यू डिड. आई रियली डोंट नो कि मतलब आई डोंट नो, मतलब क्या है प्रॉब्लम चेल्सी में, क्या है रियली. नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. एब्सोल्युटली, मतलब कुछ तो है, मतलब बिहाइंड द सीन्स कुछ तो है, क्योंकि यस, थॉमस टुकल ने भी प्रेशर दिया है, और अगेन द फोकस मेनली रीसेंट इंटरव्यूज में भी लुकाकू का परफॉर्मेंस था. उन्होंने क्लियरली बोला कि लुकाकू इज पार्ट ऑफ दैट फ्रंट लाइन, और हमारी फ्रंट लाइन से वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि कोवाचिच और कांटे को डबल वर्क करना पड़ा था अगेंस्ट मैन सिटी. और हाँ, फॉर पीपल आउट देयर जिसको याद नहीं है, जिसको भी, वो मैन सिटी का लॉस हम सबको मालूम है. ऑनेस्टली वी डिजर्व दैट लॉस, राइट. लेकिन हाँ, अभी प्रीमियर लीग में क्या तो बाकी है, 13 पॉइंट्स बिहाइंड मैन सिटी. लिवरपूल ऑलरेडी लीड ले चुकी है, जैसे हमने किया था लिवरपूल के रिव्यू में. बाय द वे, चेकआउट संडे का रिव्यू, यस, सैटरडे संडे का रिव्यू अलग से हम करने लगे हैं अक्रॉस लीग्स एंड इवन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस. तो या प्लीज चेक आउट द लिंक्स बिलो, एंड यस, आई होप यू हैव स्मैश्ड द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल बाय नाउ. एंड आई डोंट नो यार, लुकाकू का तो मतलब ये सागा एंड ही नहीं होता है, चलते जाता है, और दैट्स व्हाट आई कैन से. मतलब क्या ही तो बोलो, अगेन कमेंट बिलो, लाइक वो बेसिकली ये प्लॉट कर रहा है, ये जर्नलिस्ट जो बोल रहे हैं, मतलब आई नो समटाइम्स वो कुछ ज्यादा ही रीड किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो ही बेसिकली न्यूज स्टार्ट करवा रहा है. आई डोंट नो, लाइक लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो आ गई है ना सडन से चेल्सी के बिहाइंड द सीन्स में, which was not there last season, honestly speaking. So मेरे ख्याल से there is definitely more to it. And आप बोलिए, why is Lukaku plotting a move यार? Come on, उसको खाली 6-7 महीने हुए. Like he is someone who dreamt of playing in Chelsea. क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है लास्ट 2-3 महीनों में स्पेशली? I have no idea.
फॉर मी अभी भी कप कॉम्पिटिशंस है बाकी, होपफुली वो फोकस करे, गेट्स बैक चेल्सी ऑन ट्रैक और हम बेसिकली स्टडी द शिप ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन में। आई वुड लाइक थर्ड पोजीशन में रियलिस्टिक होगा, लेकिन सेकंड पोजीशन में भी चांस है क्योंकि लिवरपूल आर मिसिंग प्लेयर, सो that's something that I would do if I was Lukaku, but again that's up to him, and of course let's see what the media says beyond. मेरे ख्याल से certainly it's more to it, and I think certainly हमें नेक्स्ट टॉपिक में जाना चाहिए जो है मेन टॉपिक इस हफ्ते का फॉर चेल्सी फैंस स्पेशली, एंड यस विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम एज वेल एंड अ सर्टेन स्टोरी अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम बात करेंगे उसके बारे में, और ऑब्वियसली देयर इज अनदर बिग मैच लेस्टर वर्सेस स्पर्स। यस, सो यस, कमिंग टू द ब्राइटन वर्सेस चेल्सी बिल्ड अप नाउ। अरे ब्राइटन 3 हफ्ते पहले हम लोग खेले थे, नॉट इवन 3 हफ्ते पहले, आई थिंक इट वाज ऑन 29th of December, और हमें सब पता है क्या हुआ था। लुकाकू भाई साहब ने स्कोर किया था उसमें आयरॉनिकली, लेकिन ब्राइटन गॉट द इक्वलाइजर इन द एंड, डैनी वेलबेक आउट ऑफ ऑल पीपल। आई डोंट नो, और ब्राइटन के साथ कुछ तो है, मतलब यार रिसेंटली आई नो हिस्टोरिकली ब्राइटन के साथ हम काफी अच्छा कर चुके हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी रीड आउट अ फ्यू स्टैट्स टू, लाइक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। नाउ 13 बार हमने खेला ब्राइटन के साथ आई थिंक लीग में, और 13 बार ब्राइटन हमें हरा नहीं पाई, तो दैट इज समथिंग ग्रेट। लेकिन 3 ड्रॉज और कपल ऑफ ड्रॉज हमें रिसेंटली भी याद है, राइट? इनफैक्ट आई वुड से दैट द लास्ट सीजन का ड्रॉ भी काइंड ऑफ ड्रॉज था, आई नो बहुत ही वो सुपर लीग वाला माहौल था, बट वी शुड हैव वन दैट गेम। और ऑब्वियसली द मोस्ट रिसेंट वन 29th वाला हम जो बात कर चुके हैं, दैट वाज पेनफुल रियली, मतलब मोमेंटम हमारा लूज होना शुरू हो गया था तभी, बट यस हमने आई थिंक 9 बार स्कोर किया है इन अवे मैचेस अगेंस्ट ब्राइटन इन ऑल कॉम्पिटिशंस, एंड ओनली विगन एथलेटिक के साथ हमने ज्यादा बार स्कोर किया ऑन द रोड। यस, दिस इज एन अवे गेम एट द एमेक्स, और टॉकिंग अबाउट एमेक्स एंड अवे गेम्स, लाइक वी आर प्लेइंग 3 बैक टू बैक अवे गेम्स, और वो भी लास्ट गेम हमने सैटरडे को खेला था, विच वाज एन अर्ली किक ऑफ। ब्राइटन प्लेड ऑन फ्राइडे, लेकिन यार हमारा मैच आई डोंट नो फॉर सम रीजन रीशेड्यूल हुआ है फॉर ट्यूसडे नाइट। थॉमस ट्यूकल ने भी थोड़ा एक्सप्रेस किया सरप्राइज फॉर दैट। आई डोंट नो, कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक, एज एन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू दिस प्रीमियर लीग पीपल रियली क्रिएट ये शेड्यूल जो करते हैं ना, रीशेड्यूलिंग, क्योंकि हम संडे को खेल रहे हैं, ब्राइटन भी संडे को खेल रहे हैं, तो क्या आवश्यकता थी यार ट्यूसडे को मैच रखने का? आई रियली डोंट नो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Seriously. Anyway, going ahead, Brighton basically have drawn their last 2 Premier League matches against Chelsea, जैसे मैंने बोला था, लेकिन they picked up more points from these 2 outings that they had in the first 11 meetings versus the Blues. So that is that confidence बढ़ रहा है Brighton का against Chelsea, right? And obviously, उनके जो shots है, by the way, listen to this. They have had more shots than Chelsea in each of the last 3 Premier League meetings in दोनों sides के बीच में. Brighton and Hove Albion. Seriously, Chelsea, like मैं बोला था 2-3 पॉडकास्ट में recently, right? Chelsea really need to get that confidence and build something that they are building already. They need to basically go on the front foot, especially teams like Brighton के साथ. Hopefully वो होए इस बार, I don't know, let's see what happens. Yeah, only Manchester United, Manchester City और लिवरपूल ज्यादा शॉट्स मारे। I am shocked. ये क्या तो स्टार्ट है यार, I don't know, crazy, right? And yes, by the way, वो last 5 matches में unbeaten है, talk about form, right? And last 4 definitely have been really good for them. हाँ, most recent match उन्होंने 1-1 draw किया था, but they came back from behind. It was an own goal against Palace, लेकिन दे आर ऑन अ बेटर रन ऑफ फॉर्म। एंड टेबल की बात कर जाए तो आई थिंक दे आर 9th एंड वी आर 3rd। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इफ यू सी बेसिकली द फॉर्म एटसेट्रा। एंड ऑफ कोर्स ब्राइटन के पास 2 गेम्स है इन हैंड। लाइक एम आई रियली टॉकिंग अबाउट ब्राइटन एंड चेल्सी कंपैरिजन, बट ये फैक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रिसेंट ईयर्स में, स्पेशली ब्राइटन जो इंप्रूव की इन दिस सीजन स्पेशली, राइट? एंड यस, Potters, that is Graham Potter's team, जो Brighton है, they have lost 4 of their 20 Premier League games this term only. Very close to Chelsea again, right? So they deserve the respect no matter what. And I think November 20th, say, they have lost only once.
28 points from last 20 matches. Wow. I think really very good, and just 4 points behind 7th place Manchester United. और हम Manchester United पर भी आएंगे certainly. लेकिन हाँ, I think talking about injuries, I think Thomas Tuchel ने बोला कि यार injury में कुछ difference नहीं है, the same players, so I can expect certainly कि obviously Chalobah is out. रीस जेम्स बेंच पे लॉन्ग टर्म इंजरीज है. एंड्रियास क्रिस्टेंसन जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, ही विल बी आउट स्टिल. सो स्टार्टिंग 11 में आई डोंट नो लाइक व्हाट चेंजेस वुड यू मेक. आप कमेंट करिए नीचे, आपको क्या चेंजेस देखना पसंद है. विल यू गो फॉर एट द बैक थॉमस टुकल, विल ही गो फॉर एट द बैक? आई डोंट नो. लेट मी एक्चुअली शेयर माय स्क्रीन बिकॉज मैंने प्रेडिक्ट किया है चेल्सी का स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट ब्राइटन, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स आवर फर्स्ट लेग अगेंस्ट ब्राइटन दिस टर्म एज वेल. आप बोल रहे हैं यार ये वापस से 3 एट द बैक जा रहे हैं. हाँ, लेकिन हाँ, इट्स बिकॉज ऑफ द पर्सनल, और क्योंकि हम काफी गोल्स कंसीड कर रहे हैं रिसेंटली, दैट इज व्हाई आई गो दिस वे. और ब्राइटन वी आर प्लेइंग अवे, राइट? सो प्लेइंग अवे आई थिंक आई वुड गो दिस वे. एंड अगर हम चेज करें गेम को, हाफ टाइम में ही मैं बैक फोर में चेंज करूंगा. एंड यस, व्हाई पुलिसिक इज राइट विंग बैक, एंड दैट इज द डिफरेंस. आई वांट एन अटैकिंग राइट विंग बैक. Aspilicueta, fantastic defensively against City in the first 15-20 minutes. He was very good. लेकिन बाद में हम देख रहे थे his legs are not there anymore in that right wing back place. So for me वो necessary है. और up front Werner Lukaku, that's the only hope left कि वो इतने games नहीं खेले साथ में. Hopefully वो click करे, क्योंकि yes, Pulisic did not work front three में as well as basically Ziyech. Don't even talk about that for now at least. Although I love the guy generally speaking, but नहीं कर रही इतना कंसिस्टेंटली, एंड सो इज Callum Hudson-Odoi. So I would play this 11. Kovacic, Kante, dynamism लाएंगे मिडफील्ड में, hopefully better form के साथ. And they did lots against City, especially Kovacic. So मैं change नहीं करना चाहूंगा. And Kante is Kante. Let's get him back to form. So yes, Alonso is probably our only choice. Kennedy को लाएंगे आप left wing back में? Surely not, right? Surely not. Come on. That's not going to happen. But yes, comment करिए आपको क्या लगता है. Brighton on the other hand against Chelsea, they had changed their formation last time. Usually they play with a 4-4-2. 4 डायमंड होता है बीच में, या तो 4 फ्लैट होता है बीच में. तो लेकिन अगेंस्ट चेल्सी उन्होंने चेंज किया था. तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे them going back to that tried and trusted formation, और मतलब आई डोंट नो. आप कमेंट करिए. फॉर मी, लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि हाँ, मुझे सर्टेनली लगता है कि Brighton will go 3 at the back against Chelsea. Yes, I have this team क्योंकि I think if I'm not wrong, Adam Lallana is not 100% fit. They are still trying कि वो fit हो जाए, knowing against Chelsea वो fit भी हो सकते हैं, midfield में खेलेंगे in place of Moder. लेकिन हाँ, Solly March I can see coming on, क्योंकि हमारे wings इतने strong नहीं है अभी. And Danny Welbeck, जिन्होंने वो किया था equalizer score, I certainly see him coming back. Or Trossard is also great, right? Tariq Lamptey, certainly a danger weapon against Alonso again. Lewis Dunk, yes, एक जमाने में he was also linked with Chelsea, is back from injury. So maybe instead of Burn, Graham Potter खेले उन्हें, क्योंकि yes, Chelsea definitely have Lukaku, right? तो मेरे ख्याल से हो सकता है वो आएंगे. And that's what I think. Like again, comment below, आपको क्या लगता है tactic wise क्या होगा? Like I would say man to man ही होगा ज़्यादा. और for me, Tariq Lamptey is the key for Brighton, or him, just bombing on right side में, and then giving the ball to Mope and Welbeck to kind of score. Or Kukurea also. Like I have to definitely give a shout out to Kukurea and Marsh might just overlap as well. So that's something that Chelsea needs to be wary about. And hopefully, we don't get many more injuries, because we certainly have a very important fixture on the weekend against Spurs. Every fixture is important for me. Yes, I hope हम lightly नहीं ले just because we lost against City. Trust me, अगर बुरा फॉर्म होता है, काफी बुरा हो सकता है, we can go down to 4th place and even further. That's how it has been, क्योंकि Spurs के साथ games in hand है, Spurs के पास games in hand है. So a lot of other teams, Manchester United की बात करेंगे, that's something that we have to be really careful about. Just as Chelsea Football Club. लेकिन हाँ, क्या लगता है? What is your score prediction for this game? Obviously, Kepa in goal, because Edward Mendy अभी भी है African Cup of Nations में, with obviously tested positive as well. So hope he gets well soon. Malan Sarr को खिलाएंगे? I don't know. Like I was not so convinced, honestly speaking, in the last game. For me, it's going to be a close game फिर से Brighton के साथ, and I can see
Brighton basically, ये definitely coming on the front foot. हमारा confidence उस level पे नहीं है, but I would like us to go on front foot. नहीं होने वाला is what I would suggest, because we are playing away as well. So I would say that we defend, and then we score on the counter is what I would say at the end. So yeah, it's strange. Chelsea Football Club are doing that. Like, that's what I really say. Put in your comments below. आपको क्या लगता है? What is your prediction for this game that is Brighton against Chelsea? And not just that, obviously there are other games like I said. So देखते हैं. And please smash that like button as well as subscribe. Certainly has, or press that bell notification icon. We will be starting live streams again very soon, and I'm hoping you're enjoying this. Do share the link on social media अगर आप enjoy कर रहे हो तो. पहले मैन यूनाइटेड का गेम देख लेते हैं quickly. So they are playing Brentford. Interesting, by the way, ये first league meeting होगी. Yes, it's basically a rescheduled game in itself. Man United have missed some games, याद है? And that is where we see double standards. और टूकल भाई साहब बोले देते भाई साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि how basically he feels about the Premier League cancelling games for others but not Chelsea. This is the truth, right? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. Just saying. मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ what I feel, what do you think? But anyway, let's go to the Brentford game. Yes, first league meeting इन दोनों के बीच. Brentford, it's at Brentford Stadium, and obviously Man United चाहेंगे कि basically उनका फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि recent draw against Villa काफी सरप्राइज था for them to allow Villa to come back that way, or it was almost like a loss ना मैन यूनाइटेड के लिए. ब्रेंटफोर्ड के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लिवरपूल के साथ फर्स्ट 40 मिनट काफी अच्छा किए थे, लेकिन they just buckled down the pressure, couldn't finish. तो yes, it's really required. प्रीमियर लीग टेबल में भी बोला जाए तो मैन यूनाइटेड 7th में है और ब्रेंटफोर्ड अभी 14th है, तो अभी टोटली सेफ नहीं है. सो आई वुड से दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर श्योर. एंड मैन यूनाइटेड technically are unbeaten away matches में 12 matches के लिए. So against London sides, by the way, that is okay. So London में they have done quite well. So that is something आप Man United को देना पड़ेगा. और longest league run है उनका, defeat नहीं झेले in the capital since a streak of 13 between 2011 and 2013. Very interesting, huh? But Brentford have won 3 of the last 4 Premier League home matches. Have taken 7 points from their 4 fixtures played against ever-present Premier League sides at the Brentford Community Stadium so far. Well, वो एक फाइट तो डेफिनेटली रहेगी ब्रेंटफोर्ड के पास. होपफुली वापस आ जाएगी. नॉट अगेंस्ट लिवरपूल हम लोग देखने नहीं थे. तो बेसिकली सर्टेनली आई फील दैट मैन यूनाइटेड जो हाई स्कोरिंग रही है विल स्कोर गोल्स हियर, बिकॉज यस उन्होंने ऑल 10 प्रीमियर लीग अवे मैचेस दिस सीजन में स्कोर किया है. That's some record, and that's the best such 100% record in competition this term. So something to Man United, come on. लेकिन not great form. We all know overall वो टीम नहीं लग रही है. रैग्निक पता नहीं changes करेंगे in terms of the tactics. क्या लगता है आपको? Like for me it's kind of interesting, क्योंकि reports saying that Bruno Fernandes does not want to sign a new contract. सही है गलत है? अगर मैं ब्रूनो फर्नांडिस होता तो मैं ही सेम चीज करता. विद नो डिसरिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन यार जो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, एज इन अगेन लाइक चेल्सी, हमने जो बोला देयर इज मोर टू इट. सो आई कैन सी, एंड ही इज अ प्लेयर इन डिमांड, ही विल बी राइट. तो हम बोल नहीं सकते कुछ भी. एंड आई वुड सर्टनली लुक फॉरवर्ड टू दिस गेम. ब्रेंटफोर्ड का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है इन बेसिकली प्रीमियर लीग, सॉरी इन ऑल कॉम्पिटिशंस एज वेल. लेकिन Manchester United is more like draws and wins and losses. It's really mixed. Ronaldo, by the way, could be back, so that will be interesting. Again, comment your playing 11 for United. क्या लगता है आपको क्या होगा playing 11 में? But yes, that will be interesting. So Ronaldo will be back. I can see Greenwood starting. I can see Alanga, who impressed against Aston Villa, वो भी start करेंगे मेरे ख्याल से. और McTominay, I think is fighting fitness if I'm not wrong. शायद वो fit हो. And Luke Shaw is back as well. So Van Bissaka, I don't think is fit, so Diego Dalot will start. So overall, I can see them not changing the formation. They can hopefully ज़्यादा fight हो from a Manchester United fan perspective से देखा जाए तो. और ब्रेंटफोर्ड वो भी मिस कर रहे हैं players, by the way, for African Cup of Nations. By the way, Man United, Eric Bailly is missing. So yes, you can say दोनों ही teams are having players coming back from injury or missing players due to injury or African Cup of Nations. Paul Pogba अभी तक missing है, by the way, Manchester United के लिए. So I can see being an away game for Manchester United, again it will be a potential banana skin. लेकिन
मैन यूनाइटेड बीइंग मैन यूनाइटेड, मैं देख रहा हूँ मैन यूनाइटेड को जीत हासिल करके आएगी डेफिनेटली. In this one, I think Man United will win 2-1. Yes, Brentford score करेगी because of I think so many changes in Man United recently. इतने stable नहीं लगे. Against Aston Villa हम देखे, like they fell like a pack of cards, simply put, right? तो हाँ, let's come to the next game which is happening this midweek as well. Another rescheduled game है ये, और ये है Spurs who are I think traveling to Leicester. That's going to be interesting क्योंकि yes, this is I think फिर से एक गेम जो इस सीजन नहीं खेला गया है बिकॉज ऑफ कोविड, बिन कैंसिल्ड, रीशेड्यूल्ड लॉट ऑफ टाइम्स. लेकिन हाँ, इन हिज एंटायर क्लब करियर टॉटनहम स्ट्राइकर हैरी केन ने सबसे ज्यादा लेस्टर के साथ स्कोर किया है इन ऑल कॉम्पिटिशंस. दैट इज 17 इन 16 मैचेस. वाओ, दैट विल बी समथिंग दैट वो डेफिनेटली विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. और एक बार आई थिंक 4 गोल हॉल भी मिला था उन्हें 2018 में एट किंग पावर स्टेडियम. सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. Or Brendan Rodgers' side have won 2 of the last 4 Premier League matches against Spurs, as many as they have done 12 against them. So something has got to give. But Leicester midfielder James Maddison is in the form of his life again. I think last वो involved थे last 7 goals में in the last 6 appearances in Premier League. Wow, 4 goals and 3 assists. That's brilliant form. James Maddison finally वो लग रहा है जो potential लग रहा था is finally coming to consistency. But talking about consistency, Leicester have not been consistent at all. However, Tottenham in a way have been. Yes, वो हारे थे against Chelsea a couple of times in the Carabao Cup, but talk about the league, काफी अच्छा किए. In fact, there is a structure. They've not lost games. In fact, they've been unbeaten under Antonio Conte. और ये basically for any Spurs manager in the history of the Premier League is the longest start, as in the best start, right? Only 2 managers in Premier League during a season have had longer unbeaten starts. Anyone? Comment below. Con? Ole Gunnar Solskjaer. That's the irony. And Thomas Tuchel, of course. So yes, a lot of interesting stuff there. और head to head की बात करे जाए तो basically काफी interesting होते हैं इनके matches क्योंकि yes, we remember that last game of last season, Spurs literally helped Chelsea. हाँ, और basically a couple other teams. लेकिन हाँ, Leicester bottled it. 2-4 हुआ था Leicester King Power Stadium में, और गैरेथ बेल भाई साहब जाग गए थे उसमें सडन से. स्पर्स लेस्टर उसके पहले, लेकिन एक बार लेस्टर जीती थी, एक बार स्पर्स जीती. वही होते आ रहा है. तो यस, काफी क्लोज गेम होने वाला है. एंड आई कैन सी बेसिकली विद कॉन्टे बीइंग देयर, आई डोंट सी इतने सारे changes or इतने सारे basically as in even say goal chances. Yes, Carabao Cup was a different kettle of fish altogether, लेकिन in terms of the Premier League I think he's been solid. तो मैं जा रहा हूँ for interesting Leicester win. Yes, मैं Leicester win के लिए जा रहा हूँ finally. लेकिन Spurs will just about concede. I can see a 1-0 to Leicester. Yes, Leicester, आप बोलोगे यार कैसा प्रेडिक्शन है यार, लेस्टर का डिफेंस का नामो निशान ही नहीं. बट दैट इज द थिंग. आई थिंक इतने गेम्स बाद में हो रहा है ये मैच, बहुत दिनों का प्रिपरेशन है. सो होपफुली लेस्टर विल बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड सो विल स्पर्स. सो इट विल बी अ टाइट गेम मेरे ख्याल से, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा काफी. एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ एंड टू एंड गेम कमिंग हियर, एंड आई कैन सी लेस्टर निकिंग इट. आप कमेंट करिए आपको क्या लगता है. एंड यस, दैट इज अबाउट इट फॉर टुडे. डू कमेंट अबाउट लुकाकू. रियल में क्या सच्चाई होगी आपके अनुसार? क्या वो छोड़ेंगे चेल्सी? विल ही बी देयर? इट्स नॉट इजी टू गेट रिड ऑफ हिम ईदर ऑन लोन. आई डोंट नो. Bruno Fernandes, is he looking for a way out as well? Martial, by the way, that is not sorted because he's looking out for sure. And we covered in the last episode that we did Sunday roundup about Ragnick, denying that. So वो थोड़ा सा अजीब सा है story. But yes, thanks for watching everyone. I hope if you like it, you also share the stream and do subscribe because it doesn't cost you anything, and press that bell notification icon. Certainly helps. And till next time, take care. I would certainly say up the Chelsea. We'll be back soon, baby.